Hello, Manas. Hello, Rapid. Another day, another Chichi? No way. Hello, Nova. Welcome to the stream. How are you? कैसे हो सब? दुम 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 दुम. एपिस कर देना मेरा. ठीक है, अभी करते हैं. Special fan here with another challenge and reward. Welcome, let's. कर दो guys stream को जल्दी. मैं थोड़ा अपना वो कर लेती हूँ पहले. इवेंट जो चल रहा है उसके बाद तेरा एपिस करेंगे. रिवॉर्ड में मोमोज मिलेगा. रैपिड को तो रिवॉर्ड में मोमोज चाहिए. मेरा वेलकिन खत्म हो गया यार कल. शीश. बाय द वे 4.2 के 4.5 के सेकंड फेज में काजुआ आ रहा है. मैं पुल नहीं करने वाली, सेव करूंगी सब कुछ. आई वांट काजुआ. प्रोबेबली कब आ जाएगा इसका? मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा. नहीं, मार्च में आ जाएगा काजुआ. तो अगला मंथ ही है तो मैं सेव करूंगी अब सारे विशेस काजू के लिए. काजू स्किप बिकॉज मेरे में है आई एम काजू लेस. सैड. सैडली आई एम काजू लेस. अभी तो 5 विशेस मिलेंगी पहले. अभी कितनी है मेरे पास विशेस? मैं कर नहीं रही. मैंने अपने आप को पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रखा है. 5 विशेस पड़े हुई है. और इस पे आई थिंक 20 की पिटी हो गई है. 2 बार मैंने 10 के पुल मारे थे, कुछ निकला नहीं. गामिंग आ गया ऑल दो मेरे पास. जीन निकली थी. हाँ. 20 की भी नहीं है पूरी पिटी. देती भी. लेट्स गो डू. ये करते हैं. गेम की आवाज आ रही है? ये बताओ पहले मुझे. आई डोंट थिंक गेम की आवाज आ रही है. डिफीट स्कारम होस्ट विद जियो ओनली रिवॉर्ड इज 100 का सुपर स्टिकर. आई डोंट थिंक गेम की आवाज आ रही है. डिफीट स्कारम होस्ट विद जियो ओनली रिवॉर्ड इज 100 का सुपर स्टिकर. जामिंग आ गया. एक्चुअली इसको जामिंग पढ़ते हैं, नॉट गामिंग. मैं भूल जाती हूँ. जब इसका लाइव स्ट्रीम चल रहा था उसमें ये लोग इसे जामिंग कह रहे थे. तुम्हारी आ रही है गेम की नहीं. यार कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें. आए. कुछ दिक्कत आ रही है. जो मेरा इनपुट है ना गेम का वो ले नहीं रहा है. ओबीएस. अच्छा तो मेरे पास सबसे पहले तो ब्लिट्स एक ही जियो कैरेक्टर है. वो है मेरा जोंगली. और जोंगली जो है वो सिर्फ शील्ड देता है तो डीपीएस नहीं है. तो इट्स इम्पॉसिबल कि मैं स्कारामस को किसी जियो कैरेक्टर से मार दूं. होने भी चाहिए जियो कैरेक्टर्स भाई. मारने के लिए मैं तो गैमिंग ही बोलेगा. गामिंग और गेमिंग.
एन एनीमो ओनली, एनीमो कैरेक्टर भी नहीं है। एनीमो में एक जीन है बस और एक सुक्रोज है जो बिल्ड नहीं है भाई। कैरेक्टर्स बनाओ ना। टुगेदर के याओ याओ का याओ याओ के का पीछा लाओ। हायरो भी नहीं है मेरे पास ब्लिट्स, मेरे पास हाइड्रो है और क्रायो करेक्टर्स है, बट आई डोंट थिंक आई कैन किल स्कारा with it can start characters. कौन सा गेम है? हेलो गैलेक्सी, वेलकम टू द स्ट्रीम। जी जी। चल रही है मैं मेरे इस टाइम स्ट्रीम करना या सुबह स्ट्रीम करना इज लाइक पेन, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। शाम को सब शांत होते हैं, सब चले जाते हैं। क्या हाल है डीबीएल विद जेबीएल स्ट्रीमर? सब बढ़िया, तुम बताओ। ये गेंशिन है गैलेक्सी? गेंशिन? हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम, हाउ आर यू? टेंशन ऐसा भी है, आए। चलो बाय, मैं तो ऑफिस में हूँ। ओके गैलेक्सी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। अच्छा तो 2v1 करो, ऑल गुड, आई कैन ट्राई। 2v1 कर सकती हूँ। दिया वेपन से। तो कोई जा ही नहीं पा रहा।
Stage has been simply ग्रीन लॉक खोल दिया इन्होंने। आफ्टरनून स्ट्रीम नाइस, बॉक्स को धक्का मार के ले जाओ। इस बॉक्स को अब धक्का नहीं मार सकते ना। क्या जाने। छोटा वाला ऐसी जगह जाके बैठा है। देखो तुम्हारा स्पेशल फैन का दिमाग। गोबा को ऊपर रखो, फिर रैबिट से बॉक्स को उसके नीचे ले आओ। गोबा उसके पीछे ले जाओ। छोटा वाला बॉक्स ले ले ब्लू माउंटेन के पास। आ जाओ इधर। जीरो स्लाइम कब चेंज होगा मेरा? ये होगा 6 मंथ्स बाद चेंज। एक मिनट रुको, मैं आ रही हूँ।
सफाई चल रही है गाइस घर में। हेलो नेजुको, वेलकम टू द स्ट्रीम, गुड मॉर्निंग। गेम वाली कहाँ वाली? अकाउंट रिव्यू, यस सक्षम। सेंड मी योर यूआईडी। ओए ज़ियोस, तू कैसे आ गया यहाँ पे आज? अरे यार, ये वाला बॉक्स कैसे हो? कैसे हो सकता है थोड़ा? इसके मोड्स, छोटे वाले को बॉक्स लेकर नीचे करो। आई थिंक आई गॉट इट। हा हा हा, लेट्स गो। MVP 17 फेल ऑफ ट्रिपल यूआई बेटर, टॉप 900 से अभी तक 22 रैंक पे आ गया। अरे मैंने तो खेला ही नहीं, आज खेलूंगी रात में उसे। फेस्टिव फीवर कितना कलेक्ट हो गए? 200 से ऊपर हो गए, 510 हो गए भाई। नाइस। इसके स्किन का एक वो भी निकाल लूंगी। बहुत मजेदार है, इसमें बहुत प्रीमोस मिलता है। कर चुकी हूँ, बट चक्कर ये है कि हेलो नाइट, वेलकम टू द स्ट्रीम। इसमें मेरे को ज़्यादा ये नहीं मिल रहा, देखो इन प्रोग्रेस ही आया जा रहा है। कैसा था दिन? दिन तो अभी शुरू हुआ है, नाइट रात थोड़ी हो रही है। क्या हो गया? मेरे डीबीएल का रियल अकाउंट में कोई अल्ट्रा पुल नहीं किया। 28 सीसी उड़ाता हूँ सब में स्टिल। 28 के। नाइट भी लाइक मेरा नाम नाइट है, तो मैं रात की बात करूँगी, है ना? रिव्यू माई अकाउंट। रियली रियो, रियली। मतलब आप 1 बजे जागते हो दीदी? जब मुझे कोई सोने दे तो मैं 1 बजे तक भी सो सकती हूँ, उसके बाद भी जाग सकती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई सोने नहीं देता इतना ज़्यादा। पुल करोगे ना आप? किस आईडी पे पुल करूँ भाई? विली अभी अपनी आईडी पे पुल नहीं करूँगी मैं। आई एम सेविंग फॉर काजुआ नाउ। 2.5 सेकेंड फेज। नॉट करना पुल। या तो मैं शादी में सारा खाना खा जाऊंगा। ठीक है, खा लियो, सारा खाना खा लियो।
प्रवीण आए तब खाना लॉल जियोस। सकुअर नाम से फेक आईडी है, उसमें सारे अल्ट्राज मिल गए 6 के सीसी के अंदर। इसे पता चलता है गेम वाले सिम पर। नहीं बुलाएंगे। हाउ आर यू? आई एम प्रीटी फाइन प्रवीण, हाउ आर यू? नाहिदा पुल कर दोगे मेरे अकाउंट में, लास्ट डे पे 5 विशेष मिलेंगे तब कर देना। ठीक है ठीक है, डन। रियली गुड, एग्जाम्स हो गया। दैट्स नाइस। मेरे तो पता नहीं कब होंगे, पर मैं विश कर रही हूँ मार्च में मेरे एग्जाम ना हो। 18 हो गए विशेस, एक्स्ट्रा 5। और पिटी कितनी है मेरी? तीन हो गए। आप क्या पढ़ रही हो? अरे मेरी ग्रेजुएशन 3rd ईयर के एग्जाम्स मुझे लास्ट ईयर देने थे, वो मैंने दिए नहीं थे, तो इस साल दूंगी। तुम पुल करोगे तो लक बढ़ जाता है क्या? फिर तो मेरा भी पुल कर दो। यो आफ्टरनून, हेलो आदि, वेलकम टू द स्ट्रीम। देखा नहीं बैनर पे, गया ही नहीं देखकर पुल कर दूंगी। कोई बात नहीं भाई, रोज नए नए वो खुल रहे हैं। कितनी विशेष देंगे भाई? नहीं उठा रही। रेड लोटस लालटेन उठा लिया। छोड़ दी मैंने। कुछ करना था।
makes Paramore still the strongest boss. हाँ, जो नया वाला है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है। इवन मुझे लगा कि फाउंटेन में अभी तक जितने भी बॉस आया है दे आर नॉट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी तक। उससे स्ट्रॉन्ग तो मुझे अजदहा लगता है आज भी। और ये वाली लालटेन उसने लग टेल मी पिक करनी थी मुझे वहां पे भी। ओ भाई, उसमें मैं छोड़ कर आ गई ये वाली सारी। करनी थी उसमें भी। उसमें तीनों हो गया था। सबसे अनोइंग वो वुल्फ इधर उधर उछलता रहता है, हिट करना मुश्किल है। शाम को पालवर्ल्ड। हेलो रमन, वेलकम टू द स्ट्रीम। नहीं, आज शाम को पालवर्ल्ड नहीं होगा। पालवर्ल्ड का पता नहीं कब होगा भाई। एक्चुअली कोई खेलने वाला नहीं है ना, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैं अकेले अकेले उसको खेलती रहती हूँ। ऑल्दो अकेले में भी वो मज़ा आता है, बट नॉट दैट जितना फ्रेंड्स के साथ खेलने में मज़ा आता है। आज शाम में तो डीबीएल होगा, बट मैं सोच रही हूँ आज शेड्यूल मैं बना दूँ अपने स्ट्रीमिंग का। काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ स्ट्रीमिंग शेड्यूल बनाने की, बट मैं पता नहीं क्यों नहीं बना रही। 1800 चाहिए ना। ये ले लूँ क्या भाई? क्या बोल रहे हो? इसकी स्किन मेरी काम वाली आंटी है ना, बहुत कचर कचर करती है, बहुत ही बोलती है। बताओ चैलेंज में क्या यूज करोगी? अभी देखती हूँ चैलेंज करूंगी भी या नहीं। चैलेंज करने का ज्यादा।
मैं तुम्हारे अकाउंट से खेल रहा गोल्ड 2 होने वाला है, ठीक। किस गेम का अकाउंट वायलेट हो चुका है? वैलोरेंट की बात कर रहा हूँ। Add ast. Thank you for add ast. अब देखिए और क्या बचा है। कामिंग ले लूं या स्किन ले लूं पहले? 600 की स्किन आएगी। या तो ये ले सकते हैं कैरेक्टर, या फिर स्किन ले सकते हैं, ऐसा है क्या? दोनों ले सकते हो? नाहिदा है ना आपके पास? हाँ मेरे पास नाहिदा है। जामिन को बिल्ड किया अभी तक तो नहीं, थोड़ा बहुत करा है, थोड़ा बहुत। बिल्ड नहीं कह सकते उसको, लेकिन अभी तो लेवल अप ही कर रही हूँ मैं उसे। कैरेक्टर उसके टैलेंट्स इंक्रीज करे, और एविन जो पढ़े हुए थे वो दे दिया मैंने उसे। The hero's valor ripples through his robes. सिलेक्ट कर रखा था कैसे पहले से? द फक। दोनों ले सकते हो। मैंने नोटिस नहीं किया तुम्हारे पास सब कुछ है, बट आर्टिफैक्ट्स ही नहीं है मेन जिससे स्टार्ट्स बढ़ता है। एक्चुअली आई स्टार्टेड अनदर अकाउंट ऑन 1 वीक बैक एंड उसमें शान निकल गई 74 पिटी पे। दैट्स नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रवीण। यहाँ हमारी निकल ही नहीं रही है। देख के मन तो कर रहा है निकालने का, बट फिर लाइक बाजुआ चाहिए तो उसको त्यागना पड़ेगा। देखो मैंने इसको आर्टिफैक्ट एवी के दे दिए अभी, ये वाला वेपन दे दिया है, टैलेंट इंक्रीज कर दिए हैं। बट हाँ कल जब मैं वो इसे देख रही थी ना, ये मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा था, बट मैंने उसे कॉम्बैट में यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छा है गामिंग, काफ़ी अच्छा है। देखो कौन खड़ा है भाई। स्पेशल स्ट्रीम करना जिसमें आर्टिफैक्ट्स ग्राइंड करोगी, उसके लिए
रेजन्स भी होने चाहिए. But I actually need her in my main account for Shao, लेकिन नाहिदा के लिए sacrifice किया. यही तो है, मैंने तो अपने सेकंड अकाउंट में अभी तक कुछ भी पुल नहीं करा. पहले वो ओपन करके देखते हैं, उसे क्या पता पुल करे निकल जाए ये. Yeah, you're right. All it takes is one look and you can tell she's someone special. As expected of that bird lady, really. She must have a whole bunch of Adepti friends from all over the country. Okay, but if we're both friends of Cloud Retainer, then we're basically friends by association, right? Want to go up to her and say hello? नहीं है क्या लॉल? नहीं है. Helping you होते तो make मैं ग्राइंड ना कर connections is लेती. a part of Paimon's कैसी job बात as your कर रहे हो reliable यार? guide. Paimon's got this. Hello. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. कितना घबरा क्यों रहे? सारा मैक्स अब है. But we're also friends of Cloud Retainer. गेंशिन फेलो. May we अरे have the ये pleasure of पहले के learning your क्यों? name, Madam Adeptus? पहले के पढ़ रही हूँ क्या मैं You मैसेज? two... What is this tomfoolery? Has the shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? Skill issue? You're... Brain issue. अरे हो. You're the illuminated bird? But you look... human. How did that happen? Oh, donning You're human good form more is than him. scarcely any test of one's abilities. As for your confusion, one merely had no reason to indulge such inclinations before. So, you're indulging now because... Well, मुझे skill one issue has बोल made रहा है. plans to pay a visit रहे. to some disciples at Liyue Harbor. Taking on भाई a रेयो human जी form उसको for स्किल such a इशू मत trip बोल. is तुझे नहीं simply a पता way to वो make कितनी matters हार्ड less ग्राइंडिंग conspicuous. करता है गेम्स में. You? Worrying about keeping a low profile? You're the one who likes to pop up out of nowhere all over the place. In fact, Paimon can think of several examples. Like last year, when you suddenly appeared on the top of a roof without any warning. Or... Hey, didn't we agree not to bring that up unless she asked? मैंने So मिकोई you को ही have बोला. taken care to follow the proper मुझे rules बोल of रहा है etiquette भाई after वो. all. Most commendable. Well, this is all Paimon's got. You don't mind, right? One has never found oneself lacking in basic comforts. On the contrary, it is the gesture that one values above all else. So long as you've shown proper respect and consideration, the quantity or quality of the Some gift is but model. a trivial मैं matter. ना सहता ये बेइज्जती. Kinda makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Anyway, where were we before you reminded Paimon about the वो gift? क्यों बोलूँगा भाई, मैंने अभी 10 साल और जीना है. Right. So by disciples, you must mean Ganyu and Shenhe. लेजन लिमिट बढ़ाना चाहिए. Maybe we can come too. 240 One plan to एटलीस्ट extend the 240 invitation करें. even हाँ if you भाई, had not raised the 160 matter yourself. इसमें तो कुछ भी नहीं Shenhe होता. and Ganyu should be quite pleased to see you again. However, one would first inquire as to the reason behind your visit here. You have cause to seek one's company? Yeah, we just found ourselves missing you and wanted to see how you were doing. We were hoping you'd tell us one of your stories. Who knew we'd run into your human form while we were at it? Is that so? If there are no urgent matters at hand, then let us make haste for Liyue Harbor. Ganyu is likely still working at Yuehai Pavilion, so that shall be our first stop. Sounds great! Then let's all go to Liyue Harbor! Let's go. Welcome to the stream. Zeus का स्किल इशू तो है. Cute dreaming. Ganyu has been quite busy with work. अच्छा, look as of at late. him for a while. One can count on one talon the number of times she returns to Mount Outsong each year. Shenhe has also secured employment recently. In her correspondence with me, she wrote that she shall have no need to return for the foreseeable future. They think
one was so easily mollified. One shall investigate everything with one's own eyes and decide for oneself if their living conditions are satisfactory. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. Alert, I liked the end of Shannon's story quest. अरे मुझे पता है इसका स्टोरी क्वेस्ट अच्छा है. टूर्नामेंट 15 को ही है. नहीं यार 15 को नहीं है. टूर्नामेंट मार्च पे पोस्टपोन हो गया है बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स. सबके एग्जाम्स है. हेलो नेजुको, वेलकम बैक. मैं AFK थी जब तू आई थी. हाउ आर यू? Fine, how are you? How's swimming going? भाई बीच में हट उड़ा दिया मुझे तो. We're almost at Weihai Pavilion. मैंने भी गेंशिल खेलना स्टार्ट कर दिया. सही. Ganyu will be shocked to see Cloud वेरी गुड Retainer वेरी like गुड. this. शैनन का स्टोरी क्वेस्ट का एंड में क्या होता है आपको पता है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं पता. बट मुझे मैंने अभी तक रिव्यूज सुने लोगों के कि बहुत अच्छा स्टोरी है इसका. Why are you standing there, Cloud Retainer? Quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. But why? Isn't it better if we all go together? If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu would surely profess herself otherwise unoccupied and drop everything to attend to one's visit. One fears that would only result in her staying up all night to make up for lost time. One does की not आईडी wish to क्या trouble है? her. फ्रेंड में ऐड Conversing कर सकता vicariously हूँ. via you two हाँ shall कर लो ये suffice. रही आईडी. Do remember to inquire as to her recent well-being. Again, एक्सक्लेमेशन do not UID डाल दो, आ mention one's जाएगी. presence here. मिकोई Fair enough. Makes sense. ऑन स्पॉइलर डीमन स्लेयर सीजन 4 का मेरे पास है फर्स्ट एपिसोड फुल. नहीं Cloud Retainer? नहीं मांगा मत पड़ा कर. देख लिया इसमें. Oh, busted. Is that lady someone you know, Miss Ganyu? She is indeed. I'm sorry, Huixin, but could we delay the upcoming meeting for a little bit? I believe my schedule today is quite full. Although, perhaps I could move some work to later in the evening. Oh, not to worry, Miss Ganyu. I'll make the necessary arrangements. दिया right तोड़ा away. देंगे. हाँ बम Thank गिरा you, देना इसके Huixin. ऊपर. No spoiler for Demon Slayer. Hello, Ganyu. Greetings. What brings you here today? And Cloud Retainer, too. It's been quite some time since I last saw you in this form. You are quite mistaken. One is not acquainted with this Cloud Retainer of whom you speak. One is simply a mere mortal passerby. क्यों behave कर रही है कान्यू के सामने? Seems she's not buying it. That was but a simple test. One did not expect you to be able to recognize one so easily, especially after so many years of only seeing one's other form. But recognizing you is, my responsibility as your disciple. An apt observation. One was simply passing by while attending to some important business. One thought it would only be fitting to pay you a visit while in the area. Wait, Paima wasn't aware of any important. Cloud Retainer's right. We've still got something super important to do, so we can't stay here for too long today. Oh, is that so? But it's been so long since we last saw each other. One simply desired to see you and had no intention of interrupting your work. A quick conversation should suffice for today.
A more involved reunion should wait until you find yourself less occupied. I understand. That should be. While one acknowledges the amount of work that you have to deal with every जारी मेरे day, को स्पॉइलर one मिल रहा है. must तूने also किया नहीं अभी remind तक you to नेजुको ये. rest. Though adepti blood flows Enjoy through your streaming. veins, Bye bye. excessive exhaustion will still cause grave harm to your body. भेज दिए It रिक्वेस्ट. still हेलो makes एक्सेप्ट. one ओके. nostalgic to see you as you are now, respected and independent. When you were young, you oft begged one to cuddle you to sleep when you suffered from nightmares. Really? Cloud Retainer! Stop! दादियों Hmm. को कडल If you मिलते थे insist. क्लास से. We are running short on time regardless, so one will refrain from going into each and every story. Why don't you continue your conversation? One shall simply stand by and listen. Yeah. Wait. Wow, you've been to so many new places since the last time we spoke. If you ever need anything, please just come find me at UPI Pavilion. Also, forgive me for my presumptuousness, Cloud Retainer, but if you plan to continue appearing in this form, don't you think it'd be helpful to adopt a human name? A human name? Huh. You raise a valid point. Considering the sheer extent of one's renown, Cloud Retainer is surely too recognizable as a name. You really think so? Not that you're not famous or anything, but that famous? You presume to know the extent of one's illustrious achievements. One would hardly think such a thing to be possible. Nevertheless, Ganyu's advice cannot be ignored. From this point on, when in public occasions, be sure to refer to one as Shenyun. Canyon? Ah, I assume that's a reference to the full record of Pristine Pavilion. An adeptus of years past would rise with the clouds and rest with the moon. They were enlightened and wise, free and unfettered. The writer referenced Master's name to describe her carefree and spontaneous nature. Oh, that sounds super cool! Paimon feels like only the most powerful of Adepti could rise with the clouds and rest with the moon. Actually, those lines were originally written to describe Cloud Retainer herself. Huh? Wait, so you're really that powerful? And what of it? Did you truly take one to be nothing more than a bird of bigger than average size? Not exactly. To be fair, Cloud Retainer rarely speaks of her past accomplishments. The tales of her past can only be found in ancient texts. It is said that once, a long, long time ago, there was a severe drought in Liyue. Left with no choice, many people left their homes, while others spent day and night praying to the Adepti. Although I did not live through such tragedy, simply reading about it is enough to gain a visceral understanding of all the pain and desperation during that time. On top of the drought, a noxious gas also began to spread through the land. If not for Cloud Retainer's efforts, much of Liyue would be nothing more than a barren wasteland today. The books had this to say about what happened. Upon arrival, the Adeptus borrowed the wind to retain the clouds. Immediately, the clouds gathered together, and abundant rain burst forth from the heavens. Drought and plague were both driven away, and the people were saved. Wow. That's incredible! Mortal records add embellishments to dramatize past events. One did merely what one ought, and even if one had not interceded, the other Adepti would surely have stepped in to help. Even so, you stopped an entire drought! Can you really control the weather like the book said? Oh, Paimon suddenly has a lot more respect for you. So it was Paimon's bad for calling you Illuminated Bird before. You're not too mad, are you? How laughable. A name is but a simple label we carry with us on our journey through the world. आजकल ना क्वेस्ट बहुत Why would लॉन्ग हो one be गए हैं. offended प्रीमोस by के लिए such a फास्ट ग्राइंड trivial करना टाइम बहुत अनोइंग लगता है एक्चुअली. In that case, Paimon will continue to call you whatever feels right in the moment. Well, that is quite enough ancient history for now. Ganyu, have you had word from Shenhe? One has heard that she procured a job recently. Have you any thoughts on her workplace?
And what, pray tell, of her monthly remuneration? Moreover, does she find herself overly inundated with work? Is she allowed time off during Lantern Rite? That is a lot of questions. There is no cause for concern, Cloud Retainer. I introduced Shenhe to her employer personally. Wanmin Restaurant's business has been booming recently. So, with Chef Mao being swamped with customers, and Shangling still off and out in search of new recipes, I introduced Shenhe to staff the restaurant. I see. Most आपके excellent पास indeed. न्यू One has कैरेक्टर had the नहीं है, pleasure of मेरे being पास introduced तो to that कोई भी family. 5 स्टार नहीं है। Shangling is नया kind वाला and मैंने astute, पुल नहीं while her किया, ये father वाला is कैरेक्टर loyal and जो स्टोरी चल reliable. रहा है। One has no cause to believe that they will make Shenhe's work difficult. तो तुम पुल करो ना, तुम्हारे में निकल जाएगा। Now, न्यू अकाउंट में it is जल्दी 5 almost स्टार time to कैरेक्टर्स partake in the निकलते हैं। Vittles of Noon. One shall visit Wanmin Restaurant in person and see how Shenhe is doing. Huh? But didn't you just say that you had something important to do? Can that wait until after we've eaten? ये सब You भूखी may लगती return रहती to your है। work on you. One shall see to this matter on one's own. There will be many an occasion to dine together in the future. One is certain the काट opportunity दिया shall पायमान present कसने। itself most readily. Of course, Cloud Retainer. Please take care. Traveler, Paimon, I'll see you some other time. See you around, Ganyu! Paimon was pretty quick on the uptake there, don't you think? As soon as you mentioned important business to attend to, Paimon realized that अभी you मैं were इसी को looking- कंटिन्यू कर लूँ। काट दिया मोए 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 हो गया। मैं सोच रही हूँ इसको कर लूँ पहले। नेवर माइंड, इसे कर लेते हैं। चलो वो कह रही थी कि चलो खाना खाते हैं जाके, पायमान उसने मना कर दिया। No, कितने in विश हो fact, गए? it was not an excuse. 7 विशेस है। करूंगी नहीं, लेकिन काजुआ चाहिए अब। काजुआ इज मच बेटर देन क्लाउड रिटेनर। Wait, Shenhe is here. You get what I'm saying, right? Yeah, how can I not? Not even fine food is enough to distract from the presence of a वो fine पहले lady, खेलता था तब eh? डिलीट करती थी स्पेस इशू की I'm वजह से। अब far दोबारा more डाउनलोड interested in की, getting her टाइम याद details नहीं than है। ordering चीची any मिलेगा, dishes. काजू नहीं Hey, आपके how पास। about नहीं you है ना ask her? काजुआ। You आई do एम it. काजूलेस। No. I think you should. Wait, she's coming. ये वही दोनों है What can ना? I get for you today? Greetings, miss. I was just अरे wondering. डोंट टेल if मी you'd दे be आर सिंपिंग willing ऑन to, शने। What would you like to order? Eh? 2 servings of more meat to go. Good chat. Bye. रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। अभी करूंगी, रुक जा। आई एम इन क्वेस्ट राइट नाउ। Welcome. It's been a while. May I take your order? don't welcome us as guests and greet us as old friends in the same line. It's weird. Mm-hmm. तुमने साउंड बोर्ड बंद कर And रखे? this is? नहीं तो वो This is तुम्हें आवाज नहीं आ रही? Shinyan. ठीक है यहाँ पे। मेरे नाम पर राइट क्लिक करके देखो साउंड बोर्ड बंद है या चालू। One does not recall ever revealing this form to you मेरे नाम पर before. राइट क्लिक करो। How were you Mute able sound to board पे ascertain अनटिक है। one's true identity with such ease? साउंड बोर्ड में चला I've ना। trained and lived with स्ट्रीम पे Master for आवाज more खुली than हुई 10 है। years. I would इतनी देर से recognize चला him रहा no matter हूँ। what form he ठीक है took. भाई। उस पे क्या कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, ओबीएस इन गेम something the matter, वॉइस नहीं Master? ले रहा है। मुझे डेस्कटॉप Hardly. ऑडियो ऑन रखनी पड़ Hardly. रही है। One Baba, have simply you learned of your transferred, employment from your the- mother and came to check on your ड्रैगन बॉल लेजेंड्स नो स्ट्रीम रात को करेंगे आज। सुमी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? रात को करेंगे ड्रैगन बॉल की स्ट्रीम, इसलिए मैं गेंशिन की सुबह में कर रही हूँ, लाइक दिन में। और अब एक शेड्यूल बन जाएगा।
स्ट्रीम का, तो वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? It is just as क्या one चला रहे हो? expected. खटखट आवाज आ रही The है। owner of one मैं कुछ नहीं है, तुम्हारे restaurant is पीछे से आ indeed a रही है। most reasonable and accommodating human. मैं तो Still, दबा ही नहीं रही the work कीबोर्ड। here entails dealing with quite a varied group of गेम का people. साउंड नहीं आ रहा Has है। this आ been गया, बंद difficult किया for था you, मैंने, Shenhe? प्रवीण। It's been manageable so far. I sometimes run into strange बोबा, people. क्लाउड but I रिटेनर figured गानियों out a को way कहती to है कि deal जब with तू them. छोटी थी Seems like और you've जब been तू making रोती थी तो मैं progress. तुझे कडल करती So थी। by dealing मुझे भी with कर दे, them, मैं भी रोने लगूंगा। What the fuck? First, No I tried to way. talk sense into them. Don't be sassy. If that doesn't work, I threaten them with violence. At this point, they usually decide they are in favor of a civil conversation. oh, how should Paimon put this? Oh, a sensible plan. One is gladdened to see you Each integrate passing so well moment, into my human love for society. you grows And you, Master? stronger. How have you On been? this proposed day, I want you to make Simply marvelous. Though a Madame promise to Armstrong has be scarcely by your enjoyed side your always. presence recently, one has hardly found the Yes, pleasure of Boba, one's own I'll company be to your be lacking. partner I forever. see. Oh, just as expected of I'll Master. be your Shane forever. ओके बाबा, ओके बाबा। Change the I dress. have missed Master quite a bit too. Even though work has been busy बनवा lately, लूंगी, ठीक I've है? already had a conversation with Chef Mao about taking some ये time off सारी soon आवाजें to स्ट्रीम visit पर आ रही है, Master. खाने की, टाइपिंग की। You did. ये अब खराब नहीं हो गया आएगी, क्या अब आपका नहीं वो? आएगी। Do अब आ रही make है? note of such नहीं। matters in your letters in the future. There's hardly a need to keep one in suspense. Congratulations to both of Her you. mood shot up just like that. Thank you, Praveen. By the way, गाइस, आज तुम लोगों को Master, जितनी भी since you लड़कियां are दिखे in स्ट्रीम Liyue पे, Harbor, इसको have छोड़ you के had the chance to प्रपोज visit मार Ganyu? दो, दिन है, क्या पता कोई Indeed. एक्सेप्ट ही कर ले। She is similarly preoccupied with her work. There was time only to ट्राई कर exchange सकते a हो, few अगर बैन simple ना खाओ pleasantries. दूसरों की स्ट्रीम पे जाके Ganyu तो। told us the story of Cloud Retainer's name. It was amazing. We never knew how powerful she was before. पहले प्रपोज करो, फिर उसको रोज दो। I see. शने? In that case, allow What me to views? also What? share a story about Master's past. Oh, बाबा ये है ना, गंदी गंदी नजर that डालता a है क्राउड problem, रिटेनर Master? पे, ट्रैवलर। I believe this to be a good topic of conversation. सही no, में? not a problem. हाँ, तुम्हें वीडियो One भेजूं? was simply caught off वो guard. है ही गंदी But नजर no डालने matter. के लिए। Please proceed. One is most curious to see how much of वो one's तो own आंटी है, शने? conversational prowess you शने आंटी possess. थोड़ी है भाई। Master ना, once I am participated committed. in a अरे race प्रवीण against पहले से Moon committed है। Carver. After Congratulations, brother. Mooncarver lost, he आंटी insisted तो that रिटेनर है, Master's ability to fly gave सेक्सी her a आंटी, natural edge in भाभी such a मटेरियल। contest. In response, Master agreed to forego flying in return for being able to use one of her devices in the race. Mooncarver accepted, only to find Master with a brand new कौन सा device quest कर on रही the हो day तुम of ये? the contest. का स्टोरी क्वेस्ट है। What kind of device रिटेनर was का? it? It was a mechanical vehicle made out of iron. सिल्वर ने What मेंबरशिप was ली it है called क्या? again? Oh, an तब से ले रखी है, जब से electro-powered स्टार्ट हुई हुई bicycle? है। अभी दिखा रहा Oh, है। you refer to the bicyclical thunder flash mobile. ठीक है ना? One जब spent गिफ्ट कर 49 दी? days conceptualizing and crafting it. It आज need गिफ्ट only कर be दी? infused with adaptive हाँ, कर दी energy, थी परसों and it जब can करे तो cover लास्ट स्ट्रीम। thousands of miles in one day. पता नहीं किस Though किस it को मिल गई। boggles the mind why जीउस को मिली Mooncarver थी एक ever उसमें से। supposed he might best me in a contest of locomotion. Though he sprinted with all his might, he could barely keep up. Alas, the one flaw of my mechanism lay in its weakness against mountainous terrain. One was thwarted mere seconds from victory, when it was thrown off course and failed to make it across the final stretch. Truly a most unfortunate turn of events. Anyway, do go on, Shenhe. Master, that was the end of that story. Is that so? Huh. With you gone, one has seldom felt the desire to call upon those old fossils for another contest. What is a race without spectators, after all? Have you been lonely, Master? Lonely? Huh. At one's age, entire human generations come and go in the blink of an eye. Even one's own self-directed musings can span several days and nights. 'Tis अरे the भाई, most ये तो foreign बहुत sentiment. अकेली है बरसों से। Mere mention of it is preposterous. Mm-hmm. What is the reason for that look upon your face? It's nothing. It's just... Well, Paimon gained a lot of respect for you after listening to that story of you summoning the rain and everything.
But all it took was a few words out of your mouth, and it's like you're back to being that illuminated bird again. पाइमोन इसे illuminated bird बोल रही है. Who is the real cloud retainer? To me, they are both master. One is the master that's widely revered by the people, while the other is the master that I respect and adore. Huh. One finds oneself exalted yet again with In sweet simple words of way, praise and cloud flattery retainer from गानी most और शाने की extravagant मॉमी है. nature. You chose to exalt one with your words, yet you refuse to grace Mount Outsong with your presence for any extended period of time. One would almost question the sincerity of your estimation. This is not to say that your words paint an inaccurate picture. One has always lived by a single ideal. Eschew all action and abide by no rule. One does as one pleases and speaks as one pleases. Others may critique or praise as they see fit. Yet one places little weight in such judgments. She got like, what, 2 sentences of flattery from her disciple, and it's as if her ego is about to burst. Do you have any empty tables? Hey there, could we get another fish stew? I'm hearing more guests come in. I should get back to work. Alright, good luck with the lunchtime rush, Shenhe. Mm-hmm. I'll try my ऐसी best. वेट्रेस मिल जाए तो क्या ही बात है. आती रहती है भूखी. So much yummy food! Paimon's gonna feast! One is fond of all kinds of delicacies and delights in a multitude of flavors. The dishes here demonstrate no shortage of culinary skill. Their unique flavor profile has left one more than satisfied. In fact, one has रेस्टोरेंट been ओनर struck का by तो quite प्रॉफिट ही the thick प्रॉफिट है. inspiration. सही कह रहा है. One has already begun to conceptualize the next generation of supreme cuisine machines. Everything's so tasty! A bit too hot at times, but still super I'm sorry, miss, but our tables are full. Shall we try somewhere else, Granny? But it smells so delightful. Can we really not eat here? My poor legs can't go on for much longer. अम्मा को भी यही खाना Well, है. you could always check with some of the other guests and see if anyone's happy to share a table. Okay, I'll ask around. Excuse me. Would you mind letting us share a table with you? There are no empty tables left, so... Ah, well, Paimon doesn't mind. What about you guys? Great! Thanks so much. My name is Shuyu, and this is my granny, Yuendai. Granny? Yep. Is there something wrong with that? No, मैं म्यूट पे ही Paimon's रहूंगा. just a bit surprised. She looks ये so भेड़ा आ young. गया कमरे में. Yeah. स्क्रीन पे A आवाज lot of जाएगी. people compliment Granny on her youthful looks. डोंट but she's माइंड गाइस, actually हमारे much पास older एक than she पेट है जो appears. वो है शीप. छोटा सा बच्चा है शीप का. Granny, चीखता बहुत why जोर don't से. you take a seat? Come on, it's not polite to stare. Huh. Have we met before? No. ले Just a बर्फी. fated meeting then. Please. और उसका नाम है take a seat. बर्फी. What would you like to eat, Granny? I can order for you. I want braised earthworms. They always pop up out of the ground after a No, not this again. Braised earthworms? Well, that sounds weird. Do people actually eat that? Right, that's what Paimon was thinking too. वो बैलेंस अब तक अपडेट ही नहीं हुआ. Oh, do you mean with Granny? पता नहीं, वहाँ तो शो कर रहा है बट वो कह रहा है कि अभी ये सर्विस बंद है Granny आपकी. has pretty bad dementia, so her memory is getting worse all the time. सर्विस ही बंद है. She's always saying things that sound खा kind रहा of है, जैसे confusing. मैंने pहले बताया था. Actually, her हो रहा memory's था. been bad ever since I was little. They died young. मतलब बंद हो गया वो. It's just me. Oh. तो कैसे हो गया? But it's okay. Don't feel bad. मैं तो Granny तुम्हें loves बोला me a था. lot, and I. Wow. You're too kind. And देखते हैं me? अभी. Oh, what about me? You're tough too, Granny.
Plus, you're really gentle. And you're always there for... Yes, and it's hardly as if I forget everything. I still remember the important things. I remember now. It was a dream. I had a dream where everything was dark. Someone was standing in front of me. She told me to come and find her, and that once I'd found her, I would be free. आज स्ट्रीम करना आना चाहिए था तुम्हें. That sounds super important. Proposing to love of my life. How come you've never told But me about स्ट्रीम it का नाम है before? एक्सप्लोरेशन अकाउंट It was रिव्यू just a स्पाइरल अभी. dream, so I forgot about it. But I'm in a good mood Okay, now, Baba. and somehow I remembered it again. गाइस मैं तुम्हें दिखाता हूँ मुझे कैसे प्रपोज करा. You know, नहीं 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 बोबा नहीं. I've No had way. this dream a Don't do great that. many Okay. times. But Don't do that. just how many times have I had it? Now that तुम लोगों के फेफड़े फूल जाएंगे. Wait, so you have a reoccurring dream where someone's talking to you? That sounds spooky. Does that mean you're possessed? Unlikely. Her eyes are clear and उठ भी her जाओ breathing खाने is के calm टेबल and से. level. Are you sure? ये जब से यहीं बैठे हैं. Who do you take me for? इतनी देर हो Is गई. one not an adeptus? तभी पॉपकॉर्न Am बनाती है I सोरिया. not an expert? You're right. Paimon almost forgot you're... हाँ तो ये पॉपकॉर्न बनाती है तो खड़ा रखोगी ना. कल दिखा नहीं था तुम मैंने. खद्दू एक नंबर की. नहीं था वो पॉपकॉर्न नहीं था. Not anymore. Although Hello? I have a sense that she नहीं looked चाहिए भाई. rather like me. हाँ बस. But not as I am now. My younger self. A younger version of Granny? This is just getting weirder and weirder. What is going on here? As one said, fate must have brought us together. You may leave this situation to me. Are you sure? So, what are your names? क्लाउड रिटेनर है तो सुन ले. Paimon. Not regretting on pulling her. Just Shenyun is fine. Thank you all so much for offering to help. But first, I'm sorry for asking. बट काजुआ आ रहा है सेकंड फेज में 4.5 How do you के. want us to pay you back? किसने बोला? कंफर्म हो We गया. don't need any payment for this. मार्च में आ जाएगा. है? किसने बोला? देखा था मैंने टीवेट स्टोरीज देख ली. All we have to go off is that dream. That is elementary. Since her dreams portray her younger self, then we shall retrace the steps of her youth. Once we have revisited शानियन those नई places, her अनबीटेबल memories will likely return. 20 पुल करे थे आफ्टर लूजिंग ऑन जीन बट नहीं मिली तो आई एम नॉट गोना पुल फॉर हर नाउ बिकॉज काजुआ आ रहा है तो मुझे काजुआ चाहिए. आई एम गोना स्किप होल 4.5. आई थिंक 4.5 में ऐसा कुछ खास कैरेक्टर नहीं आ रहा. I might have an idea. Once, when I was really little, my dad told me that Granny used to be a martial artist heroine who saved loads of people from a disaster. If it's true, then maybe they wrote about it in the history. A martial arts heroine? Oh, Shinjo knows tons about Liyue's chivalric traditions. If anyone knows about the heroes of the past, it's him. Let's go find him at the fate. Are you Very leaving good. already? But I'll go order some food, Granny. If there's nothing on the menu you especially want, I'll just get a few different things. It seems we must part ways for now. The traveler and Paimon न्यू are विलेट bound भी for the स्किप कर Feiyu दो. Kame न्यू विलेट Guild, मेरे पास है while ऑलरेडी you and I अनबीटेबल. and Shuyu shall remain here बट and अगर partake of their lunch. तुम्हारे पास नहीं है For तो मैं myself, कहूँगी न्यू I have विलेट को matters to मिस मत discuss करो. with वो street बहुत ward अच्छा Wrangler. कैरेक्टर है. Street word कामा wrangler? में मारता चूतिया. Oh, you mean Madam Ping! Precisely. Let us meet at Yujing Terrace once you are ready. Tina, welcome to the stream. How are you? चिन्मयी. Tina, अरे हट जाओ भाई. रास्ता दे दो. चिन्मयी. जिंदा है ब्रो. कैसे हो सब? I am good. बोबा गोद गामी. I got C1 coming. पक्का बोबा. नो फ्लैक्सी है. पुल पे नहीं मिला मुझे. एक तो वैसे मिला था पुल पर. एक मैंने कैरेक्टर से निकाला. अरे मैंने इसकी स्किन नहीं निकाली अभी तक. देख चेक नहीं करी. शिंग चुके निकाल ली बट मैंने उसको वो नहीं करा था. पहना नहीं.
The hero's valor ripples through his robes. His ये garments मुझे steeped in न्यू the विलेज spirit जैसी क्यों of लग रही है? bamboo groves. पुरीना पुरीना लेडी पुरीना वो नहीं बॉय पुरीना 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 का 4 स्टार वर्जन शाने की दिखाना पुरीना मैं नहीं चिन्ना स्वामी मुत्तो स्वामी पॉज करो हाँ। आर्चीव पे जाओ कैरेक्टर आर्चीव पे लाइव पे हाँ। उसमें शहने को खोलो अब उसकी स्किन देखो स्किन तो आ नहीं रही आएगी मुझे शो नहीं कर रही एट्रीब्यूट में होगी नहीं कोई नहीं छोड़ो शॉप में देखो हाँ शॉप में दिखेगी बाबा ये वाली शॉप हाँ दिस इज द रियल डील रियल डील इसके बाल कितने सुंदर बनाए इस वाले में बेटर मोमी देन रियल मोमी चार वेलकिन और खरीदूं 1350 वेलकिन चाहिए बट ये ऑफर 31 डेज में खत्म हो जाएगा मैं तो खरीद लूंगा मॉमी इज मॉमी कान्यू की उससे क्यों सिमिलर है स्किन कान्यू इज कोको गोल्ड अबे यार आज शॉप में देखो क्या आया मैंने ये एंटर फ्लेम वेंडर इसके बाल बांध दिए इसके बाल बांध दिए इस बार एक मिनट द लॉस्ट हाइड्रो आर्क कौन है वो शॉप में देखो कौन शिंगचू की बात कर रहा है तो पानी गमछा है यार उसके आगे ये भी बहुत अच्छी लगती है भाई मुझे ये भी अच्छी है भाई निंगवांग fuck we are doing checking mommies Tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. लो पैसे हैं तो Breakfast right there. पैसे हैं बट अभी हम लोगों को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है गिव अवे करना है तो मैं अभी खरीद नहीं रही What brings you here? Shincho! Great, we found you! We wanted to ask you about something. Nice. Yes. That's not a whole lot of it. I can't pinpoint her identity from your description alone. But... Nameless heroine? That's right. The novels often speak of a great drought from 50 years ago. As the people suffered, a nameless heroine appeared and began to clear away evil spirits and bandit camps. The people idolized her, but never learned her name. All they knew was that she always acted alone. Later, though, she supposedly fell in love with a similarly noble-minded exorcist from Mount Tianheng. They were well matched in more ways than one, often fighting together as a fearsome duo of otherworldly strength. After the drought ended, the heroine and the exorcist left the public eye and began living a reclusive life in the mountains. All that remained were tales of her incredible accomplishments. The way this nameless heroine faded from fame into obscurity later in life is not too dissimilar from Miss Yuendai. I hope that's somewhat helpful.
Shincho. We knew it'd be worth talking to you. It's nothing at all. Just something I came across while reading. I did do a bit of extra research on her story, but it was just out of personal curiosity. Well, Paimon still thinks that's super cool. Oh, wait, Shincho, if you've read up on her, do you know of any places often associated with her? Let me think. In the novels, the nameless heroine always appeared near one of 3 places. Wangshu Inn, the area just north of Jueyun Karst, and Qingyun Peak. Perhaps the real-life heroine who inspired the character was also often seen near those 3 places. That would explain why those locations appear in the various novels written about her. You're welcome. I won 50 To 50 be and honest, I and found got some Cloud parts of the Retainer story at confusing 77, when I which first nice. came And I across won it. 50 50 and got If Cloud Miss Retainer Yuendai at was indeed the 26, original which inspiration for the character, it's rare for a chivalric hero to fade into obscurity during their lifetime, even after retiring from the public eye. But no one ever saw or heard from the nameless heroine again. There were even rumors that she became extremely ill. I've never understood why someone would go to such lengths to erase themselves from public भाई memory. मैं चला जाऊंगा यहाँ It's से. almost as if she was trying गेट to बंद hide कर from रही something. है. There's कर probably रही far हूँ more नहीं. to the story than what's been Chris, written. please. We'll be sure क्या to हो tell गया you if we चिना manage to क्यों? uncover the truth. Hola Vulture, welcome to the That's a deal. stream. How are you? Perhaps, behind the truth of it all, there lies a story more fantastical than सबको any ऐसा work of लक fiction. Paimon feels like we just सबका learned ऐसा so लक much नहीं from होता. Shincho. अरे क्रिस का Now पहली the बार nameless 26 पिटी heroine पे निकला, allows us वरना to हमेशा play it. हार्ड पिटी हिट होती थी 80 की. Wait, why does the story sound super इतना familiar? दुख मत लगाओ अपने दिल से. Oh, पहली right. बार क्रिस There's के a साथ girl ऐसा in हुआ है this कि story 26 पिटी पे too. निकल गई है वो. Shincho, are 5 girls स्टार super कैरेक्टर. common in वरना YA or लूज भी 80 something? पिटी पे होता था, विन भी Well, 80 पिटी पे they होता था. used to be. अकाउंट की स्पेलिंग But गलत है टाइटल people में. have long since developed methods to prevent them, like by cultivating the soil or स्पेलिंग digging गलत नहीं है, एन canals. मिसिंग है. So while droughts do happen from time to time, they are rarely regarded बाबा as true disasters. उसी को स्पेलिंग The गलत drought कहते 50 years ago is probably one of the worst we've हो had in the सकता है last several ना. centuries. The crops withered, the streams ran dry, and the monsters in the mountains became rabid and agitated. Countless caravans were attacked, and people who lost their homes came together to form bandit क्लाउड groups. रिटर्नर चाहिए नहीं थी बट What started as a natural disaster soon became a Mom is human always tragedy welcome. as well. That sounds awful. Yeah, and that's exactly why the nameless heroine was so beloved. She must have been someone of true integrity, to do so much for the people while asking nothing in return. Still, as terrible as that drought was, it was nothing compared to the truly calamitous disasters that befell this land in ancient times. They say that back in those days, disasters were both more severe and more common. Only the strongest of Adepti could hope to dispel the ruin and devastation. Do you have any other questions? रेडन रिव्यू करो. UID भेज. चेक DM if you have time. हाँ? क्या भेजा है? Paimon hopes that Granny Yuendai will be able to remember more of her past. She used to be a great hero who saved many people. So nice. So sad that she can't recall any of it. Anyway, we'll be off now. See you some other time, Shincho. Thank you so much for your help. It's no problem at all. क्या Safe लुक सो गुड travels. बाबा. अरे इसने वो भेजे हाँ? स्टिकर्स अच्छा. भेजे. स्टिकर्स देखो मैं दिखाती हूँ आपको. क्या टी पे क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? कर दूँ.
रेडन एट 90 पीटी वो भी गारंटेड। ओह लॉल, एनीवे कांग्रेट्स, मेरा रेडन रिव्यू करो। थैंक यू थैंक यू। Drawings ideal animation is different actually भाई, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनिमेशन दिया है इसका, बहुत अच्छा। क्या बोलते हो गाइस, मैं अपडेट कर दूं स्टिकर्स अभी? रेओ क्या बोलता है, कर दूं? इससे वेट नहीं हो रहा। So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. If gaming is Pyro Archon and hiding it. ना चिल्ला नो। Pyro Archon तो तब आएगा जब नेक्स्ट स्ट्रीम पे करूँ। ओके, शाम वाली स्ट्रीम पे करूँ। क्या कहते हैं, जब वो आएगा नाटलान आएगा। आई थिंक अब नेक्स्ट जो रीजन खुलेगा वो नाटलान ही होगा, शज़नाया एंड में आएगा। I have recorded the tune that you requested. I hope it will be of help to you. Oh, thank you. सुना है बाबा मेरी आईडी गोल्टू चली गई है। We all know Benny is the real icon. और क्रायो आर्कॉन, क्रायो आर्कॉन जब शज़नाया आएगा तब आएगा। मैंने ऐसी उड़ती खबर सुनी है कि क्रायो आर्कॉन वाज द वन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और मैंने ये भी सुना है कि आई थिंक पायरो आर्कॉन मेल होगा एंड क्रायो आर्कॉन इज फीमेल। If anyone is hiding their disguise of Pyro Archon would be Bennett, no one else. Yes, उसका आर्मी भी है। शज़नाया का ना, जो क्रायो आर्कॉन है जो। Why so formal all of a sudden? I must say, you're making me a little nervous. क्रायो आर्कॉन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी अब। मुझे लगता था पायरो होगा, बट रेक्स लैपिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लोअर एक्यूरेट। बट यार ये रेक्स लैपिस बहुत ज्यादा लाइक वो दिखाया है, माइंडफुल है बहुत ज्यादा। What are you two talking about? Nothing save for some Oh, trivial Michiro, matters. welcome to the stream. How are Have you? you unearthed any useful Anyway, I'm a details? knockout now. Didn't slept much last night. Okay, Rio. Good night. Take care of yourself. No lure. Wise song is strongest. Sorry, उस दिन चला गया। कोई बात नहीं। Do not be troubled, young lady. Here, have some tea. कि और बोलते हैं कि इट्स हार्ड टू बीट क्रायो आर्कॉन आर्मी। हाँ, मुझे सही बताऊँ तो ऐसा लगता था पायरो आर्कॉन जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और जो सबसे ज़्यादा लाइक सब पे वो एलिमेंट ऐसा है कि सब पे ज़्यादा ऊपर रहता है। बट क्रायो एक्चुअली में इसमें बताते हैं कि है। बाय द वे आप वही हो ना पॉडकास्ट वाली? हाँ भाई वही हूँ मैं। बाय द वे जल्दी ही हमारा सेकंड पॉडकास्ट होने वाला है मेरे चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। आज क्या तारीख हो रही है? 8 तारीख हो रही है ना। हम करते हैं उसे नेक्स्ट वीक में कोई से भी दिन हो सकता है। अब ये नहीं पता कि कौन से दिन होगा। अभी मैं डिसाइड करूंगी इन लोगों के साथ बैठ के कि कब वो लोग फ्री हैं, तो तब हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, सेकंड पॉडकास्ट ऑन माय चैनल। मिचरो, आई हैव सीन यू इन सम अदर स्ट्रीम। रेडन रिव्यू। 1 मिनट दे वल्चर, ये स्टोरी थोड़ा रुक जाए, मैं भूल गई थी। मिस्टिक वुल्फ वेस मैडम पिंक का एज कितना है? पता नहीं, बहुत सालों से जिंदा है भाई ये। चलो इसका रेडन रिव्यू करते हैं भाई वल्चर का। आई थिंक वल्चर तूने पहले भी दिखाया है अपना रेडन। ये तू ही है क्या? Ayaka and
Pogo Man? Who is Pogo Man? I didn't remember, but I have seen him. लाइक कर दो गाइस स्ट्रीम को जल्दी जल्दी. नाइस एनर्जी रिचार्ज. 260 इज मिनिमम होना चाहिए. 260 से ऊपर जाता है तो वेरी गुड है. क्रिट डैमेज 158. क्रिट रेट थोड़ा और बढ़ सकता है क्या? या इसे क्रिट रेट की जरूरत नहीं होती इतने. तुझे ये कैसे मिला? मेरे पास नहीं है ये, और ना ही मेरे पास कैच है. नेवर माइंड. रेट बढ़ा सकता है तू वल्चर इस पे. एक्स्ट्रा डैमेज बोनस विद एनर्जी रिचार्ज. क्रिट रेट कम जा रहा है बस थोड़ा इसका. जो मिल रहा है इससे ही मिल रहा है तुझे क्रिट रेट. Pogoman Chow. China, I also have seen you yesterday only. You were on a stream, I guess. इनगल्फिंग और रेडन दोनों लास्ट बैनर में ही पुल की थी. अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई. जो मुझे इनगल्फिंग पे मैंने करा ही नहीं पुल. मुझे करने नहीं दिया लोगों ने, पता नहीं क्यों. तो मेरी हार्ड पिटी पे हिट हुई थी इस पे रेडन पे लास्ट टाइम. पहले मैंने लूज किया जीन पे, देन अगेन 40 की पिटी पे मैंने स्टार्ट किया था. मैंने 50-50 लूज करा 80 की पिटी पे जीन पे. देन उसके बाद मैंने अगेन 74 की पिटी हिट करी रेडन निकालने के लिए. इतनी मेहनत करी मैं क्या बताऊँ. अब यही चाहती हूँ मैं कि विशेस वेस्ट ना करूँ ताकि मुझे इतनी मेहनत काजुआ पे ना करनी पड़े, क्योंकि काजुआ मेरा कंफर्म है. क्योंकि रेडन के बाद मैंने 10 पुल करे थे, उसकी 4 की पिटी पे मेरी जीन आ गई थी. तो अब मेरा कंफर्म कैरेक्टर है. मेरा को नाहिदा भी मिल गया इसी बैनर पे. सही में वल्चर माइन. हाँ शाओ के बारे में मुझे इतना नहीं पता. अयाका बता सकते. तेरा नया अकाउंट है क्या ये? मुझे 98/40. तो क्रिट रेट कम है. क्रिट रेट कम है. एनर्जी रिचार्ज और बढ़ सकता है. इसका वेपन तो अच्छा दे रखा है तूने, इसका मेन वेपन. और इसे इस पे क्यों कर रखा है बिल्ड तूने ग्लेडिएटर्स पे? इसके लिए उस पे जाना. क्या नाम है उसका? याद आ रहा मुझे. ब्लू कलर का जो हम यूला को देते हैं. ब्लिजर्ड. ब्लिजर्ड बनो. आपसे पुराना है. हाइब्रिड. कौन सी है यहाँ का है भाई? यूला को पेल फ्लेम देता है. यूला को पेल फ्लेम कौन देता है? मैंने तो ब्लेजर्ड दे रखा था. यूला के सारे आर्टिफैक्ट उठा के गानी और आयाका में बांट दिए मैंने. क्या डैमेज कैरी हो रहा है. हाइब्रिड क्या होता है? शाओ को मुझे पता नहीं है ऐसे. शाओ के बारे में नॉलेज नहीं है इतनी. इसका अच्छा है ग्रेट रेट. ग्रेट डैमेज अच्छा दे रखा है तूने इसे. कि अपने अल्ट पे वो लूज करता है ना अपनी हेल्थ. शाओ. ब्लैक क्लिफ पोल. ब्लैक क्लिफ हम हुताओ को भी देते हैं ना. यूला फिजिकल डैमेज बिल्ड करते हैं. फिजिकल डैमेज ही बिल्ड करी हुई थी भाई. मेरी फर्स्ट 5 स्टार कैरेक्टर थी. इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी. शाओ के बारे में. F2P.
को मैं दिखाती हूँ तो some seasonal green. पेल फ्लेम ही दे रखा है, माय बैड। मैं कंफ्यूज हो गई इसमें और इसमें, ब्लिज़र्ड और पेल फ्लेम में। मेरा यहाँ का देखो, And a piping hot bowl of fresh. एनर्जी नहीं है लेकिन बेचारी पर एनर्जी दे भाई। अयाका को एनर्जी नहीं दिया तो बेकार है अयाका। वो घंटों में तो उसका वो होता होगा रिचार्ज। हाँ कम है काफी। इसका क्रिट रेट भी कम है भाई। As a jeweler या cherishes अयाका their को क्रिट gems. रेट नहीं देना होता। लेट मी चेक। एक तो मेरी मेमोरी बड़ी खराब है भाई, मैं भूल जाती हूँ कैरेक्टर क्या करना होता है। तौबा A blade embraces मेरा भी its कम है duty. बहुत As a jeweler cherishes their gems. 20 है। She does not need CRE much. हाँ I see. सक्षम शानलिंग प्लीज। शानलिंग okay. 95 something है। Dope breakfast right Can I there. add you as a friend, Perfect way Chino? to start Yeah, your you day. can. 35% more is more than enough. Blizzard लेकर। सक्षम का शानलिंग। क्यों दिखाना है तुझे अपना एनर्जी रिचार्ज भाई 149/63। कैच दे रखा है इसे, बढ़िया है। आई थिंक ये क्रिट रेट तू और बढ़ा सकता है इसका, या यूचिरो यूआईडी दे दो मुइचिरो। ओ भाई C5, दैट्स सो नाइस। एक मिनट, बैलेट कितने कर रखे हैं इसके तूने? क्राउन ना इसे भी 10 कर देना पूरा गोवा वाले को। Booms and eyes. मेरे पास भी शानलिंग के कॉन्स्टलेशंस थे बट कितने हैं आई डोंट रिमेम्बर। आई गॉट C6 शानलिंग, नाइस। आर्टिफैक्ट ही नहीं है नेवर माइंड सही है बट उसको आई थिंक तुझे ये देना चाहिए। और इसका क्रिट रेट दे दे थोड़ा, मेरा तो बहुत ही कम है। मैंने इसके आर्टिफैक्ट्स उठा के इधर उधर बांट दिए, जो मैं यूज़ नहीं करती ना उठा के दे देती हूँ इधर उधर। इसका मेरा जो इसका अल्ट है ना वो बड़ा सही काम करता है शानलिंग का। अगर मैं इसे क्रिट डैमेज दे दूँ तो ये बहुत अच्छा काम करेगी, बट अफसोस मैं आई एम लेजी, सो लेजी। इसका मैंने वेपन भी किसी और को दे दिया भाई उठा के। ये देखो ये हम यूज नहीं करते, साइनो इसको दे देते हैं इसका आर्टिफैक्ट उठा के। मेरे पास देखो यार कितने सारे कैरेक्टर्स है बट मैं बिल्ड ही नहीं करती कैरेक्टर्स। And boom booms प्रेटी and नोब यू कैन से। mouth. पहले से ही बताऊं तो मुझे 1-1.5 साल तक तो कैरेक्टर बिल्ड करना नहीं आता था, और कितना रेशियो करूं एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता सकती, देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्ट। रुक जा But are you guys all adepti in disguise? बताती। Oh, about that. Well, you guys just seem super special. Plus, I think I might have heard Miss Shen Yun call herself an adeptus. Must have been a slip of the tongue. Shen Yun, since you were the one who, misspoke, maybe you can explain to Shuyu here what you really meant by क्रिट that. डैमेज तू कर दे। One is indeed an adeptus. Is that of some concern to you?
one time when सब I was a DPS little बिल्ड है kid, मेरा. I saw a pure white सब illuminated DPS crane. है तो ठीक है They उस had this हिसाब से. super high सब fever, DPS के हिसाब and से they ठीक है must तेरा be बिल्ड. mad. अगर I was प्रॉपर feeling DPS all पे जाना है तो itchy and क्रेट और क्रेट gross. डैमेज को Then इंक्रीज करना this पड़ेगा snowy दोनों को. white crane flew down from the sky. She put me on her back and flew me to her cool Adeptus house and fed me some sort of magic potion. When I woke up, I उस was हिसाब से already तेरा back in रेशियो the ठीक bed, है बट and थोड़ा my क्रेट fever रेट was बढ़ा gone. सकता है. I really wanted to thank आई her, सेंट रिक्वेस्ट. but I अभी was चेक too करती sleepy हूँ. to stay चलो awake, आफ्टर so द I never स्टोरी. got the chance. So I just kind of wanted to ask if maybe 0 any of you UID. have ever met an Adeptus like that? A pure white illuminated रेडन crane? नेशनल में उसे The only यूज two we've करता ever हूँ मैं met बस. are blue हाँ and तो white फिर and ठीक है. black and brown. गुड Have टू you गो. ever met one that's pure white, Cloud Retainer? Never has one met an Adeptus with such features. One surmises such a description is but a hyperbolic embellishment that oft results from narrative accounts. That's weird. Was it really just a शुक्रिया. dream then? Well, even if it was just in my head, it doesn't matter that much anyway. All I really तूने want is एबिस to कर help लिया Granny अपना. recover कितना her कितना हुआ? memories. हो गए पूरे I'm really 36 स्टार. grateful for all your help. मेरा नहीं हुआ. Leave it to us. Now that we know the 3 locations, we Quest just need to वाला नहीं visit हुआ. them 12th one by स्टेन में one. मेरा. Let's go to Wangshu Inn first. Okay, I'll go get Granny. Wangshu Inn. Wangshu Inn. Do you remember this place, Granny? Yes. The fish here is very delicious. And if you look out into the distance, you can always spot a bird that's been left behind by its flock. I believe I used to have a room here. It had a window. Yes, I spent a lot of time looking out that window. Which room was it again? Let me look. I'll come with. Paimon's still having some trouble understanding what she's talking about, but if she's so familiar with this place, that must mean she lived here, right? Wait, huh? Whoa! Shell, what are you doing here all of a sudden? You scared the living daylights out of Paimon! I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. I suppose there's no cause for concern. It's been a while, Cloud Retainer. I see you have returned to your previous form. I have indeed. I fought alongside her in this form on many occasions during the Archon War. Oh, wow! What was she like during the war? Oh, wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? Behold, the glory of one's newest invention, the Bang Bang Continuous Fire Mechanism. Hands up and surrender, or be prepared to face the full might of the Adepti. An impressive imitation. Paimon knows her all too well. Even so, Cloud Retainer was not always as ostentatious as you describe. You may be unaware, but her talent with Adepti sigils is just as formidable as her skill in mechanics. The Archon War reached its peak after Guizhong's death. The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles was taciturn and solemn, only speaking when she had to activate her sigils. A Cloud Retainer who barely talks? Paimon can't picture it. But what happened after that? If you were so powerful in your human form, why did you decide to take up your bird form again? Once one had bid farewell to the world of mortals, what use would one still have for such a shape?
When dwelling between mountain and forest, away from the struggles and troubles of the mortal world, a mortal form is hardly the most fitting of choices. After the war, Cloud Retainer retired to Mount Outsong, only revealing herself to the occasional visitor, and always in her avian form. Although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago when she decided to don her human form. I believe it was for the purpose of... One believes there is little need to relive bygone matters. Granny, are you okay? Back then, at this place, Can skip right. Perhaps this I am conversation should watching end this here. story. Don't I shall mind. take my leave now. Should you encounter any trouble, you need only call my name. However, given that you are traveling with Cloud Retainer, I trust you are in good hands. For pity. Everyone, I think Granny is finally beginning to remember Yeah, her I past. want to know the story. That's why I'm not skipping it. Slowly now, calm your mind and recount what has been recalled. a long time ago, I stayed here to recuperate from my illness. Huh. So what she... I don't remember. I'm very sorry, but I can't even remember the name of my illness. The only thing I can remember is that it took a great toll on me, and there was no cure for it. Sibila. I was confined to my Confirmed room है in ना Willy? Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. I'd come to every once in a while and stare at the migrant. One day, I met a traveling merchant. Upon hearing of my illness, he sold me a bottle of soul revitalizing. He told me that the pills were concocted using adepti blood and could be used to alleviate my symptoms. Sure enough. Wait, but if your illness remained dormant for several decades, are you saying that what you're going through now is just a relapse of what happened? And it was all thanks to the pills that you managed to keep the symptoms in check? Paimon's brain kinda hurts. I'm sorry, I don't. Hey, you're not useless. I have joined your Discord server. Okay. Watched me grow up, raised me. I need a gift. Could you say that What about gift? Oh, fret not, dear child. Granny was just a थोड़ा bit जल्दी आते हैं frustrated. स्ट्रीम पे like around 5 of February तो तुम्हें membership मिल जाती फ्री. Finding pieces But अब of तो one's मैंने gift past कर is दी always already. superior to not finding anything at all. This Let us make haste to the much next Primogen, location. sorry. Next location. मैं होयो लैब में काम नहीं करती. There isn't really a landmark there, so होयो where वर्ड्स should में we काम नहीं start? करती. होयो वर्ड्स ना, it's होयो वर्ड्स और it's होयो लैब. Let's हे check out हे the houses in कितने the विश area मिले. first. मेरे पास 8 wishes हो गए अभी. If she was good for any length of time, then she would have stayed somewhere, right? Oh, Paimon's really got her thinking cap on today. At this rate, we'll recover all of 2.0. Granny Wendai's memories in no time. मैं सोच रही हूँ इसको बाद में कंटिन्यू करूँ और अभी जाके ये कर दूँ क्या पूरा. इसमें से कुछ बच रहा था नहीं. आई थिंक सो. ये वाला नहीं किया मैंने अभी तक. ये भी स्टोरी है. हुला उन टाले टाले हूँ. करो इजी है क्वेस्ट. अरे एक मिनट. आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. Wine is a healthy drink. Could it be true? What I've heard. तेरे अकाउंट में कितने विश हो गए? तेरा अकाउंट मैंने ओपन कब किया? इवेंट क्वेस्ट. The healthiest drink is tea. क्वेस्ट कर ली.
ओके ठीक है। डिस्काउंट का साउंड आपके साइड से है क्या? डिस्कॉर्ड का साउंड आपके साइड से है क्या? डिस्कॉर्ड का साउंड आ रहा है क्या? आई डोंट थिंक। कल गेंशिन लाइव करोगे? हाँ करूंगी विले। कोई भी साउंड नहीं आ रहा पीछे से कोई। ये वाला करते हैं चल के, इसका स्टोरी क्वेस्ट तो हम कर लेंगे। मेरे साइड से है। हाँ मेरे साइड से पीछे से कोई वॉइस नहीं अभी आ रही है। टिम्स यार मोमोज खाने का मन कर रहा है अब। सुबह या शाम को? सुबह में करूँगी। या हो सकता है शाम में भी हो कर सकूं। I just ordered. The food should be out in a second. देखते हैं। Sit down, sit down. Let's all take a seat. Here, hand me your cups. Oh, thank you. Wait, you weren't supposed to drink that, Paimon. That was for you to rinse your utensils. लॉल छी भाई। बिली अभी करेंगे तेरे अकाउंट पे बोल। Wow, so much delicious food. Do you really eat all this? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. नहीं कल? If it's not चलो enough, ठीक है we कल can always करते order हैं। more. Oh, and there's tong कल soy 5 coming as विशेस well. और मिलेंगी ना? I अच्छा usually हाँ have that in the आई morning, रिमेम्बर। but well, since what about you, traveler? Is the food to your liking? Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure. तेरे मोमोज लाने पड़ेंगे, भूख लग गई। So full. That meal was so satisfying. It even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's figured it out. Let's think about this for a second, Gaming. कल मैं 12 पे दे दूंगा अकाउंट And ordered a whole table full of इंस्टा पे। expensive ओके dim ओके। sum. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. कलर अच्छा है ना इसका? Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gami. Okay. Gaming ही बोल enough रही with है the यार ये तो teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was तुमने onto जो something स्टिकर there. अपलोड करे वो कहाँ है? My dad is just करा an है देखो, ordinary tea चेक merchant. करो। Small 3 scale ही करे stuff, अभी, you know? सारे नहीं करे। It wouldn't even make sense to mention that my dad. He always wanted me to inherit the family business, to be a merchant like him. एक ही But that's दिख just रहा not who I am. कौन-कौन से That's गो को not who I हटा ever दिया? wanted to be. अब ये तुमने इनकी एक्सपेक्ट रेशियो इतनी छोटी रखी है वो दिख वैसे ही नहीं रहा। नहीं वो फर्स्ट वाला ठीक करके डाला है ना मैंने। Talk to him about it. हाँ। वो 2 छोटे हैं नीचे वाले, उन्हें ठीक करके डालना पड़ेगा। शाम वाली स्ट्रीम पे करूंगी सारी चीज चेंज। I told him I wanted to गामिंग be का a डैड wushu इज पायरो dancer. और कौन? अरेना। I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. Wushu dancing One is day, that dragon वाला He डांस? tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. मुझे लग रहा है I हो haven't been सकता back है ये since. Don't get on my case just yet, okay? ये It's not like कहीं I और think I'm का है, completely यहाँ without का तो fault. है नहीं गामिंग। No, I
I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Calming. But I'm sure you both It's already know how calming that's only. going. It's not charming or Wushu gaming. dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in एक्चुअली hiring a मुझे performer. इस गेम की इन Most गेम times, वॉइस it ना wound up being जापानीज nothing में but humble पसंद है pie. बट स्टोरी जो समझ And आती है you ना can't वो just rely इंग्लिश on में ही pennies आती for है food on the इस table, वजह right? से मैंने चेंज So, नहीं करी है अभी I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? नमस्ते बोल स्टार आ गया स्कूल से Okay, enough of all that बट serious talk. सब Our tea's getting से cold. वी कैन Let's do something fun this वी afternoon. रीड राइट do you रीड say, में huh? एक्चुअली I'll उतना organize. मजा नहीं आता जल्दी जल्दी रीड करना पड़ता है Kinda already have plans this afternoon. We told Xianyun that we would go to her kite इट्स making लाइक workshop. जैसे स्टोरी चल रही है और हम पढ़ भी नहीं रहे या फिर लाइक हम चैट पढ़ रहे हैं तो हमें स्टोरी समझ आ रही है बिकॉज दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश Oh, no. It's just that I happen to know Auntie जब Xianyun. स्कूल से आ गया वापस जा व्हाट द फक रियली उसको आंटी बोल रहे शानियन को Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery बट once. जापानीज इज सो डैम But गुड now हाँ that she's लाइक been in the वैसे city lately, खेलते रहो ना जब she's कुछ even चल नहीं रहा tried, होता गेम with में some इवेंट limited वगैरह success, to तब मैं उसको change her चेंज कर tools of देती हूँ self-address जापानीज or में something like that. अगर कल नहीं हुआ तो She came to see नेक्स्ट me a दिन few पर days ago सेव to ask about रखूंगा who the आप best ही dice करना are. ओके Oh, विली wait a पाइमन second. वॉइस इज सो She doesn't क्यूट plan on putting those on a kite, does स्कूल she? से पनिशमेंट मिली क्या पनिशमेंट मिली तुझे Not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter हेलो entirely. Why couldn't she सीनियर tell me what she मॉडरेटर wanted होने them के for? बाद भी मैं चूतिया दिख रहा हूँ तो ये शो क्यों नहीं कर रहा With मैसेज that में sometimes. It would be such a shame if वो everyone वर्ड worked so मैंने hard शायद on से their रिफ्रेन kites कर only for रखा them to है get ruined in the end. 10 Okay, टेबल I'll go with 1000 you. टाइम्स If Auntie Xianyun wants to use those dice on a kite, the formula will need to be changed. Great! The more the merrier. चलो इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं उसके बाद मुझे 3:30 पे निकलना है तो मैं प्रोबेबली एंड कर दूंगी माय कंप्यूटर टीचर निक नेम इज बिट्टू अच्छा फिर कांड कर रखा है तूने उसके साथ कोई बिट्टू बिट्टू चिल्लाकर तो नहीं आ गया ऐसा नहीं हो सकता कि बीएफ के senior साथ moderator- बाहर जाना है नहीं बीएफ तो गेम खेल रहे हैं मेरे मुझे पढ़ाने जाना है मैं ट्यूशन लेती हूँ क्लासेस ट्यूशन पढ़ाने ही इज प्लेइंग वैलोरेंट अरे भाई छी and he is not my boyfriend though Chena he is my fiance so my friend mock him and save him his friend including me got punished and save him expected bold start expected oh married nice no we are not married yet we will soon get married this year only झूठ बोल रही है the fuck thank you no I'm not lying ask anyone everyone knows about it yao ya Ganyu! Ganyu! Come on, wake up! अरे ये खड़े खड़े सो रही थी Hello, friends. शादी को स्ट्रीम करते हो हैं शादी को कौन स्ट्रीम करता है भाई Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Wanmin restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone.
Apologies in advance. क्या करेगी ये? ओ Wait, Shenhe? Not there! See? It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? वर्चुअल मैरिज ना भाई, Or maybe something to eat? हम तो बहुत दूर है तो कैसे देखेंगे आप I दोनों की just शादी? chilly all over. Huh. Was it that? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean वो that तो पॉसिबल नहीं है, अगर इन सिटी होते तो अटेंड कर सकते थे. doesn't think that's what the expression... I feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often. शादी का खाना Perhaps चाहिए you इसे. should come work at Wanmin restaurant with शादी me. का खाना सबको Get चाहिए. off at 10 on the dot every night without fail. Hello Clam, welcome to the stream. बहुत जादू is I'm here. sorry. I seem to have missed एक your name. मॉडरेटर को फोन दे के स्ट्रीम करो बोलो. हाँ कोई आएगा तो उसको बोल दूंगी. Me? My name is Game. Coming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an We extremely need शादी का enthusiastic खाना. worker, and you are very जादू का तो मैं generous क्या with your करूँ? help. I don't know who is जादू. Well, you know me. फैंसी जाएगा. हाँ फैंसी आएगा ना, फैंसी को पकड़ा This दूंगी. is Shenhe, and this is इसने Yare. YouTube पे कहानी आती है, उस बच्चे की It's an फोटो honor लगा to रखी finally है. meet ठीक you है all. भाई. Oh, Clam you से. must be here for Auntie Shen Yun's kite making workshop, right? By the way, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ चिना. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Plus, By the way, Clam, did you pull for her? Cloud retainer? right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's अरे चीची और याओ बेस्ट फ्रेंड है. डोंट टेल मी. शादी लाइव स्ट्रीम होने वाली है. her a huge surprise. ऐसा लोग कह रहे हैं करने I को. also brought bandages and हैदराबाद ointment से with me दिल्ली today. बहुत दूर. It's easy to भाई come हमारा and मॉडरेटर work with कोलकाता my रहता है, वहां boo. से आएगा So भाई. I thought I should come prepared. सही है. Wow, you're really thoughtful. 40 As पुल्स for किए, myself, नहीं मिली. I'm afraid कंफर्म I नहीं था lack क्या? some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us लाइव to have जाकर the best मोबाइल there is. कहीं ऐसे एंगल में रखना जिससे सब दिखाई दे शादी. नहीं 50-50 है. मैंने तो लूज कर दिया 50-50 जीन पर. 4 की पिटी पे आफ्टर रेड इन. अब कंफर्म है बट अब पुल नहीं करूंगी क्योंकि काजू आ My रहा है. motivation for being here might be a little different. क्लेमेंसी कौन है? But I'm ready to put in just as क्लेमेंसी much है effort जादू. as everyone else. यू कैन चेक आउट हर चैनल. We're all here, but where the hell is Shen Yun? वो अलग अलग गेम्स That खेलती है. speaks of oneself in such an ill-tempered tone. अरे 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 क्या चल रहा है पीछे? Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. हेलो हेलो. Come get it while it's still warm. ओबा. Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird. Paimon always knew you were the smartest, coolest, Oba. and prettiest adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? चैनल लिंक. वेट लेट मी शेयर. दूसरे जन्म के बाद. विली भाई आपका शादी कब? तू सबका शादी करा दे अब. दूसरे जन्म के बाद.
चैनल चाहिए कोई ऐसा टपकना, नहीं चाहिए कोई ऐसी टपकना है। ठीक है भाई। So delicious. Paimon's life is complete. It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the You can go and instructions check one out her provided while we channel. were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eat. Paimon knew she could count on you, traveler. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get started. Why don't we go MNC see what कितने साल का है? लड़की है भाई, वो लड़की है. She is 21, I think. Clem, how old are you? You can ask her on her channel. मैं 6 months का हूँ. Lol. चलो guys, मैं अभी चलती हूँ. आज मैंने रेजन्स यूज़ नहीं करे, इनको मैं कंडेंस कर देती हूँ. बट मैं सोच रही हूँ गामिंग के लिए. ओह, बड़ी लड़की है. हाँ भाई. सोच रही हूँ ये वाला बॉस को मार के जाऊँ एक बार तो. Thought she is kid like 13, 14. 2 मंथ का हूँ. सब छोटे बच्चे हो. I have high hopes for this journey. MNC happy birthday. क्लेम का बर्थडे है क्या? अडॉप्ट कर लो मिकोई. मैं तुझे अडॉप्ट कर लूँ? Ask Chris. I should ask Chris about it. Shine down. Order kite. Show her your praise. Let the world fly. Be sanctified. अरे डेफन वो पीछे से गालियों की आवाज आ रही थी. वेट अ सेकंड. इसलिए मैंने डेफन किया था. कहाँ से आ रही थी पीछे से गालियों की आवाज? क्रिस इज योर BF राइट? थैंक यू विली भैया. प्लीज माय फियांसे. अडॉप्ट कर लो मुझे. क्यों? कोई आवाज नहीं आ रही थी पीछे से. आ रही थी बोबा. पीछे से गाली की आवाज आ रही थी. अब ये नहीं पता वो इन गेम कोई गाली दे रहा था उसकी आवाज थी या पता नहीं किसकी थी. हाँ, इन गेम आवाज आई थी. वो इन गेम कोई गाली बक रहा था. इन गेम आवाज तुम्हें कैसे आ रही थी? आ रही है मुझे भी आवाज. ये देखो, ठीक है, देख. अभी बोला किसी ने कुछ उल्टा. हाँ तो मैं म्यूट हो रहा हूँ. ठीक है. इसी बात पे पार्टी दे दो. किस बात पे पार्टी? हाँ आया 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 आया. आई नो आया. पार्टी नहीं तो यही कोई 2-3 करोड़ दे दो. ठीक है भाई. हाय सस्ता नशा, वेलकम टू द स्ट्रीम. सीलिंग चाहिए तुझे?
काली वाली हीलिंग मिकोई एंड क्लेमेंसी आप दोनों मिलके मुझे और विली भाई को प्रिमोज दे दो। ठीक है ठीक है दे देते हैं भाई। तो मैं वहां तो नहीं दे सकती बट मैं तुम्हें ऑन स्ट्रीम वो दे सकती हूँ। मैं गरीब हूँ, आपका शादी का पार्टी एंड क्लेमेंसी का अडॉप्शन का। अरे भाई ठीक। हाँ हम गरीब हैं मैं भी गरीब हूँ तो अपने अलर्ट्स भूल गई। All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. स्लैपर्स बुला देती हूँ। क्लैम बाय जादू। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? What is level? क्या सस्ता नशा? What level are you talking about? What is your level? AR? Are you talking about AR? It's 58 right now. World level is 8. नया मिला था पाइमन वाला, मैंने की लगा लिया। AR तो ना भाई बीच में से। इधर था डॉक्टर। फाउंटेन में है, मुझे ऐसा लगता है ये सुमेरु में है। मैं सुमेरु चली जाती हूँ। छुआ नहीं हुआ लंच। मैं ज़्यादातर अपना लंच मिस करती हूँ। Shine down. Now you shall perish. There is no escape. I will have order. Strike a pose. Time to shine. The time is begging. तुम शादी कब कर रहे हो? ट्वेंटी वन का हूँ, बहुत टाइम है। चलो बाकी हम बाद में करेंगे। 7 हो गए, 8 9 10 11 12 2 बार और करना पड़ेगा। 60 70 में करोगे मतलब। अभी के लिए हम रेजन्स को कंडेंस करते हैं और चलते हैं। चलो गाइस शाम में मिलेंगे 8 बजे या फिर आफ्टर डिनर फॉर DBL स्ट्रीम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जा रहे हो उससे
उससे अच्छा शादी नहीं करूंगा। बाय बाय बोगा। TBL ड्रैगन बॉल लेजेंड्स। Bye. Bye, Clem. Okay. Have a nice day, guys. Bye bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.